आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। लोकसभा में उस वक्त तीखा माहौल बन गया जब असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सीधे सवाल करते हुए भाजपा को घेर लिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख ओवैसी ने सदन में कहा है कि अगर सरकार सबके लिए समान न्याय और सुरक्षा की बात करती है तो फिर कुछ मुद्दों पर चुप्पी क्यों साथ ली जाती है। उनके इस सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार विरोध शुरू हो गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद खड़े होकर जवाब देने लगे। देखते ही देखते सदन में शोर शराबा बढ़ गया और कुछ देर के लिए कार्यवाही को बाधित कर दिया गया। Sir, my point of order satisfies Rule 376, subsection 1 and 2. What is that? It is, sir, 200A clearly says, before a motion can be listed, a determination has to be made. 1. Resolution is specific in its charges, clearly expressed and free of imputation and defamatory statements. Now, who has made this determination? Because Article 96 clearly says that when a motion 96 clearly says Speaker cannot be over here. My question to the House is, who has made the determination? Because the Supreme Court in Nabam Rabia has clearly said that a Speaker against whom a notice of removal has been given cannot exercise adjudicatory powers in proceedings connected with the removal. So who has made this removal? The House should know. Secondly, sir, you come to Article 96(1). It governs what happens when a removal motion Speaker is under consideration. Speaker cannot preside. What 96(1) says, then say that 95(2) shall apply to every such sitting. What is 95(2)? It lays down the hierarchy done by Baba Sahib. First Deputy Speaker, you don't have a Deputy Speaker. If the Deputy Speaker is also absent, such person has been determined by the rules of procedure of the House. Third, if no such person is present, such other person has been determined by the House. Sir, you are sitting over there. I challenge it also. Why? Because you read Nabam Rabia, Constitution Bench case. Once a notice of removal has been given against a Speaker, the Speaker cannot exercise adjudicatory or discretionary powers that have a bearing on those proceedings. That is these proceedings. The Speaker has a direct personal interest in the outcome, and that interest disqualifies him from acts that shape these proceedings. You take the judgment of Quixote Holohan. Supreme Court reinforced that constitutional functionaries exercise adjudicatory function must observe natural justice. You have been appointed by the Speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Let me complete. Article 95, Article 96. You are quoting Rule 10. Rule 10 cannot overtake the article of the Constitution, sir. So that is why this government has created a constitutional mess. Let me complete, sir. Please. Let me complete, sir. In the last three, no confidence, the Deputy Speaker. That is why I say, first, the proceedings are constitutional irregular. I got it. Your No. Let me complete. Sir. Sir, आप कृपया सुनिए. Sir, I have gone through. Chairman, sir. I have gone through Article 94, 95, Chairman, sir. and I have Chairman, already sir. seen power of the Deputy Speaker or other person Chairman, to sir. perform the duties of the office or to act as a speaker. If you'll go through, I think so. Your answer is Chairman, sir. completely. एक मिनट. निशिकांत दुबे जी. बड़े विद्वान आदमी हैं सर ओवैसी साहब. 95(2) क्या कहता है? ये पूरा पढ़े नहीं सर. पूरा मैं संविधान की बात करता हूं. बड़े विद्वान हैं, बैरिस्टर हैं. ये कह रहे हैं सर कि पीपुल द डिप्टी स्पीकर इफ ही हैज आल्सो एब्सेंट such person as may be determined by the rules of procedure of the house. Rules of the procedure of the house ये है सर जो ये 10 कह रहा है.
10 ये कह रहा है कि जो भी उस चेयर पर बैठेगा, जो हाउस ने पहले से डिसाइड कर रखा है, उसके पास स्पीकर का उतना ही अधिकार है। यही आर्टिकल 95(2) कह रहा है सर। ये थी आज की ताजा खबरें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिटीजन वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उषा और हम फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, सीधी साफ और आपकी आवाज के लिए। तब तक जुड़े रहिए सिटीजन वॉइस पर।